हम लोग आज थोड़ा सा इसको पढ़ने वाले हैं, पढ़ने शुरू करेंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। और इसमें हम लोग के सिलेबस में एक इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, और जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका कहाँ पे इसमें एप्लीकेशन होगा। So in last class we discussed computer memory, memory addressing, and ये जो RAM and ROM, how they are different, and what are its applications. So today we are going to the last segment of this chapter, this unit, microprocessor. So before going to this 8085 microprocessor, I would like to discuss in general, what do you mean by microprocessor, and what does they do, and some very introductory things about microprocessor. Then we will go specifically about 8085. So a microprocessor is a programmable device that accepts binary data from an input device, processes the data according to the instructions stored in the memory, and provides results and output. So in other words, the microprocessor executes the program stored in the memory and transfers data to and from the outside world through input-output ports. Any microprocessor-based system essentially comprises three parts, namely the microprocessor, the memory, and peripheral input-output devices. The microprocessor is generally referred to as the heart of the system, as it performs all the operations and also control the rest of the system. The three parts जिनको हम लोग बात किए कि the three parts which microprocessor, memory, and the peripheral input and output devices, they are connected by data bus, address bus, and control bus. तो ये ऐसे देखे एक इन जनरल दिखा रहा है कैसे कनेक्टेड है। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी। हम लोगों ने मेमोरी पढ़ा है। माइक्रो प्रोसेसर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर क्या है, बट जनरली जो हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक सीखा है, पढ़ा है, रजिस्टर, काउंटर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वही सब चीजों को मतलब हम लोग जो फंडामेंटल तरीके से पढ़े हैं, ये एक पूरा सिस्टम है, उसमें वही सब पार्ट्स हैं, उनको हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर वैसे तो बेसिकली पूरा पूरा कोर्स की तरह होता है, जो पीपल हैव मतलब एमएससी में भी हम लोग ऐसे था कि एक पूरा कोर्स था जिसमें आधे में पूरा माइक्रो प्रोसेसर था, दूसरे में आधे में कम्युनिकेशन जैसे था। तो माइक्रो प्रोसेसर को एक दो क्लास में पढ़ाना मतलब हम लोग जस्ट इंट्रोडक्टरी थोड़ा कुछ जान पाएंगे, और बहुत ज्यादा डिटेल में अभी जाएंगे। So we all know what is address bus, we know data bus is bidirectional, and control bus, this is memory में कुछ प्रोग्राम रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करता माइक्रो प्रोसेसर के। So it is a little bit about history, how these things came in, कितने पुराना है ये सब। So the first microprocessor was introduced in 1971. So it means it's about 50-year-old thing by Intel Corporation. It was a 4-bit microprocessor. Bit microprocessor का मतलब यही होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 8 बिट, तो वो 8 बिट एक साथ में मूव कर रहा है। जैसे एड्रेस बस में हम लोगों ने देखा था कि 8 बिट है तो कैसा कितना एड्रेस बस डेटा बस कैसा होना चाहिए कि वो पैरेलली उतना डेटा प्रोसेस कर सके। तो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 by Intel Corporation, and it was a 4-bit microprocessor which was named Intel 4004. So other 4-bit microprocessor developed were Intel
4040, and different type of technology, different type of. This is how eventually it evolved the field of microprocessor. And हम लोग जस्ट बहुत इंट्रोडक्टरी एक दो क्लासेस में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके एक जनरल आइडिया डेवलप करने का कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट 8-bit माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग 8085 पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज आल्सो 8-bit माइक्रो प्रोसेसर. द फर्स्ट 8-bit microprocessor named Intel 8008 was also developed by Intel in the year 1972. The first multi-chip 16-bit microprocessor was National Semiconductors IMP16, introduced in 1973. So you see, we use our personal computers. Here we have 64-bit microprocessor. Sometimes we have 32-bit microprocessor in our laptops generally. तो ऐसे ज्यादातर जो भी डिवाइसेस है, जो डिजिटल डिवाइसेस है, उनके ऑपरेशन में इस तरह का कुछ हमको प्रोग्राम देना होता है, एंड दैट प्रोग्रामिंग वर्क्स इन अ वे. सो दैट इज व्हाई वी नीड माइक्रोप्रोसेसर्स 64-bit 32-bit. एंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एन 8-bit माइक्रोप्रोसेसर. ये हमारे सिलेबस में है. सो इनसाइड अ माइक्रोप्रोसेसर का एक तरह से एक जनरल ब्लॉक डायग्राम जैसे हम लोग बात कर रहे हैं. अभी हम लोग 8085 की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल अबाउट अ माइक्रोप्रोसेसर. सो माइक्रोप्रोसेसर में जैसे ये ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज है. इंटरनल बस, कंट्रोल बस, डेटा बस. दिस इज ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर फाइल. So you know registers, we have learned shift registers. Shift registers जैसे होते हैं, ऐसे जैसे ये रजिस्टर फाइल, ऐसे बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं. We have seen memories are different type. रजिस्टर बेसिकली क्या है? डेटा ही स्टोर करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर देयर. हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे. सारे रजिस्टर हम लोगों ने एक शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा है, और कितने तरह के शिफ्ट रजिस्टर्स हो रहे हैं, उनका क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे क्या है, हम लोग बहुत डिटेल में जान नहीं सकते. अपने कोर्स के स्कोप के हिसाब से समझने का इसको कोशिश करेंगे. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में जब CRO पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया, और ब्लॉक डायग्राम से उसके एक एक ब्लॉक को समझने का कोशिश किया. दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आवर कोर्स. And when we are learning microprocessors, then again we will go, when we start this 8085, then we will go on looking its block diagram, and then through that block diagram we will try to understand its functionality, its working. So in general, microprocessor, पहले वाला जो डायग्राम हम लोग देख रहे थे, this is where there was a box, इसमें microprocessor लिखा हुआ है. So now we are talking about inside the box. The memory and input-output devices are part of system. They are connected to address bus, data bus, control bus. But now we are going inside this box. What is inside there? So we are talking in general. There are this register file, ALU, control unit. So what is this ALU? Arithmetic Logic Unit is the core component of all microprocessor. So basically जो भी ऑपरेशन देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, उसका कुछ एक लॉजिक होता है. तो जो लॉजिक है वो यहीं से गवर्न होता है, ALU से. So this is core component of all microprocessors. It performs the entire integer arithmetic and bitwise logical operation of the microprocessor. जितना कुछ जब भी हम कुछ लॉजिक देते हैं, तो लॉजिक में अपने हिसाब से ही अर्थमेटिक और ये सब चीजें आई जाती. सो अर्थमेटिक एंड बिटवाइज लॉजिक ऑपरेशन, जो भी लॉजिक दे रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर के, बेसिकली जो प्रोग्राम बोले, प्रोग्राम का प्रोसेसिंग होता है. सो इट ALU प्लेज
a very central role. ALU is a combinational logic circuit. हम लोगों ने दो तरह के सर्किट्स पढ़े हैं, combinational circuits and sequential circuits. So we have discussed the differences of that, combinational circuit और sequential circuit में क्या difference है, कैसे उसमें जो हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट होता है, and in sequential circuit the sequence matter में memory element comes in the picture. Here ALU is an combinational logic circuit. हम लोग इनपुट देंगे और उसके बदले में हमको आउटपुट मिलेगा. And has two data input lines, a data output line and a status line. It gets the data from the registers of the microprocessor. Registers का जब हम लोग बात करें तो जैसे हम लोगों ने शिफ्ट रजिस्टर सीखा है ऐसे ही समझ लो. कई तरह के रजिस्टर्स हो सकते हैं, but in general we know shift registers. Shift registers are used for data storage and data transfer. So similarly, it gets data. ALU को जो डेटा मिलता है वो जो बहुत सारे रजिस्टर्स है माइक्रोप्रोसेसर के उनके थ्रू मिलता है, and then it processes data according to instruction from control unit. So you see, ALU gets the data from register file and control unit जो है वही बेसिकली एक प्रोग्राम जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं. So it takes instruction from control unit and then stores the result in its output registers. तो समझ में आ गया कैसे ये चीजें कनेक्टेड है. ALU performs all the arithmetic and logic operations. So it takes data from, the data is stored in registers. Different type of registers are there. So कोई तो register से वो data लेगा and then according to instructions by control unit, it will process it, then it will send to store in some register file. So this is how arithmetic logic unit works in a microprocessor, and this arithmetic logic unit is core component of microprocessor. Okay, then let's go to the next thing. This register file, what it is. इसमें बहुत सारा चीजें हैं, but हम लोग बहुत थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं. The register file comprises various registers used primarily to store data, addresses, and status information during the execution of program. तो बेसिकली ये डेटा स्टोरेज के लिए काम करते हैं. कैसा डेटा? डेटा है एड्रेसेस, मतलब देयर आर समथिंग टू स्टोर, जिसको कंट्रोल यूनिट को चाहिए होगा कि ये जो देखो डबल साइडेड एरो, मतलब इट कम्युनिकेटेड फ्रॉम, इट टेक्स डेटा फ्रॉम हियर, गिव्स डेटा फ्रॉम हियर. दिस इज आल्सो ALU आल्सो डज दिस थिंग. इंटरनल बस मतलब ये अंदर डेटा कनेक्शन के लिए कुछ करना है, and then control bus, data bus. This is how it goes out of this box. So it register file stores data, addresses, status information during the execution of a program. Registers are sequential logic devices built using flip-flops that we already know. हम लोगों ने flip flops के थ्रू ही शिफ्ट रजिस्टर जब सीखा तो हमने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने flip flop सीखा. flip flop एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर पा रहा है. Then we go to registers and counters and all. So you see, if you now after end of this course you look at the structure of this course, then you remember जब हम लोगों ने पहला क्लास शुरू किया तो हमने कहा कि पहला यूनिट थोड़ा सा अलग है, then सेकेंड यूनिट उसका कोर है, थर्ड थोड़ा सा एप्लीकेशन है, फोर्थ समझने के लिए हमको सेकेंड थर्ड का पूरा पता होना चाहिए. So this you see all things when we discuss, we have studied it somewhere before. तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से बने हैं. फ्लिप फ्लॉप so there comes a sequential. So there's arithmetic logic unit wasn't made of combinational circuits, and register files are made of sequential logics. So sequential logic devices, or they are sequential circuits. Then third thing is control unit. You see in this box, you see only three things, major components. Major component of a microprocessor: ALU, register file, and control unit.
So the control unit governs and coordinates the activities of different sections of the processor and input-output devices. इनपुट-आउटपुट डिवाइसेस हम लोगों ने अलग से पढ़ा है और तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करता है? इट गवर्न्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द प्रोसेसर। जो बाकी कुछ हो रहा है प्रोसेसर में उसको भी वो इंस्ट्रक्शन देता है एंड देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किससे डेटा लेना है किसको डेटा देना है ना लॉट ऑफ कंट्रोल थिंग कम्स फ्रॉम दिस यूनिट। अब ये यूनिट क्या है इसके अंदर क्या है ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे विद इन स्कोप ऑफ आवर कोर्स। ओके, so it is responsible for controlling the cycle of fetching machine instructions from memory and executing them। फेचिंग मशीन इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? वही जैसे मैं सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ कि कैसे कहाँ से डेटा लेना है और कैसे उसको प्रोसेस करना है। सो ऑल दिस थिंग्स इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। Okay, so it also coordinates the activities of input and output devices. It is undoubtedly the most complex of all functional blocks of the microprocessor and occupies most of the chip area. The control unit is sequential logic circuit which steps the processor through a sequence of synchronized operations. It sends a stream of control signals and a timed pulse to the components and the external pins of the microprocessor. So now you see after in 2-3 slides जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, you have an in general idea कि microprocessor कैसे है, क्या है, and then how it addresses all these things and address bus, data bus, control bus, and then first we saw general microprocessors होते क्या है, क्या काम करते हैं, क्या क्या उसके major parts हैं, and then we are going inside this box. So inside this box we see this three things. One is register file, this is control unit, this is ALU, and how does this work? We try to look in very brief way. We try to understand what these all segments means to do. So control unit is a very complex, as it says, complex, and it takes a lot of chip area. So you see, we learn integrated circuits. So all these things are available. A microprocessor is also available in the form of an chip. So a lot of मतलब जो अभी हमारे पास इतनी कॉम्पैक्ट डिवाइसेस हैं, it is because of that integrated circuits. Okay, so now after having this basic idea of microprocessor and its internal components, major components are ALU, register files, and control units. तो थोड़ा थोड़ा एक कुछ आइडिया हुआ कि माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है, क्या करता है. नाउ we are going to the specific microprocessor which is in our syllabus, which is Intel 8085 8-bit microprocessor. तो बोले इसको 8085 microprocessor generally बोलते हैं. It is an 8-bit microprocessor designed by Intel in 1977. तो बहुत पुराना है अभी के हिसाब से. And using this as a technology, we are not going into that great detail of this technology. So it has following configuration: 8-bit data bus, 16-bit address bus, which can address up to 64 KB, a 16-bit program counter, and 16-bit stack pointer, 6 8-bit register arranged in pair. These are 3 pairs. इनको ऐसे करके नाम दिया गया. And it requires 5 volt supply to operate at 3.2
मेगाहर्ट्ज सिंगल पल्स क्लॉक। तो जो क्लॉक होता है, जैसे तुम देखोगे ना, हम ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर का कुछ एक फ्रीक्वेंसी रहता है, तो उसका कुछ अगर हम लोग बहुत डिटेल में जाके जनरल बात करें तो जो क्लॉक पल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं। फिर मैंने देखा इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनका एक प्रोग्रामिंग होता है। इफ यू सी वॉशिंग मशीन, यू गिव अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि ऐसे मोड में हमको चलाना है, ऐसे कपड़े धुलने हैं। सो हाउ डज दिस मशीन नोज हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू डू, कितने मिनट में कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करता है। सो फॉर दैट वी नीड एन माइक्रो प्रोसेसर। सो यू सी वी आर नाउ एट स्टेज, हम लोग ऐसी बातें कर पा रहे हैं जहाँ पे एक कुछ बड़े इंस्ट्रक्शंस हैं, ज्यादा सारे प्रोग्राम हैं। अभी हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे, रजिस्टर रजिस्टर पढ़ रहे थे। सो नाउ वी आर एडवांसिंग, वी आर गोइंग टू द higher level, and these things are more like we see in practice all this washing machine, microwave ovens, मोबाइल फोन। सो ऐसे ये सब ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर, particularly this one is used। सो अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे देखना चाह रहे हैं कि ये कैसे दिखता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, एंड देन इन कमिंग क्लासेस वी विल गो इनटू ग्रेटर डिटेल ऑफ दिस डायग्राम कि इसमें क्या हो रहा है, और उसको हम लोग ब्लॉक बाई ब्लॉक समझने का कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दिस इज पिन कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एन 40 पिन चिप। अब हम लोग को अभी इन सब चिप का क्या क्या नाम है, कैसे क्या क्या, ये सब नहीं पता है, और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि तुम लोग को कुछ इसको रटना चाहिए, रटने का जरूरत नहीं है, बट हम लोग इसको थोड़ा समझ लें कि किसका किसका क्या मतलब है, कहाँ से कैसे हो रहा है। तो ये हम लोग कमिंग क्लासेस में सीखेंगे। आज हम लोगों ने थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये सीखा, माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली कैसे हो काम करता है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, उस सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखा। अब हम लोग आगे चल के इसके और डिटेल में जाएंगे। सो दिस इज पिन कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 40 पिन आईसी इन अ वे, यू कैन से चिप ऑफ 40 पिंस। अब इसी में इन सब का कुछ कुछ नाम है, इनका कुछ मतलब है, द कोडिंग, जो भी कुछ कोडिंग लिखा हुआ है, वी एज ऑफ नाउ वी कैन सी दिस इज clock, this is VCC, means this is how we give power to it, and you see there are a lot of other things जिनको हम लोग अभी नहीं जानते हैं, which is okay, we will try to understand one by one। और इसको किसी को मतलब इसको रटने का जरूरत नहीं है, we will try to find out if we have to write some question, then we will try to make a question general in a way। तो ऐसा कुछ और इसको ऐसे याद करने का जरूरत भी नहीं, लेकिन लोग ऐसे याद करते हैं, बहुत सारा चीजें याद करते हैं। आई डोंट थिंक एनी कोई भी ऐसी पढ़ाई जिसमें ऐसे किसी को कुछ मगअप कराना हो, दिस इज नॉट गुड थिंग। आई डोंट बिलीव इन दैट वे ऑफ टीचिंग। तो दिस इज पिन डायग्राम। हम लोग इतना जान लेते हैं कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 40 पिन का आईसी होता है। धीरे धीरे हम लोग इसकी और चीजों को आगे क्लासेस में समझेंगे।